Assalamu alaikum, dear students. Today we will discuss an important topic of electromagnetic induction, that is AC generator. इसको हम AC क्या कहते हैं? Alternating current generator. Alternating current generator. Alternating current क्या होता है? ये आपको separate topic है. We can discuss in detail in the next topic. थोड़ा थोड़ा बहुत मैं इसके बारे में बताऊंगा अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है. पहले मैं एसी जनरेटर डिफाइन करूंगा. पहले मैं ये डिफाइन करूंगा एसी जनरेटर. जिस एसी जनरेटर यहाँ वनान एसी डायनेमो तथ अमिच डेफिनेशन क्या. First of all, we will try to understand the definition of AC generator. It is the device. It is the device which converts mechanical energy. This is very important. Mechanical energy into electrical energy in the form of alternating current. That means ये सह डिवाइस कन्वर्ट कर मैकेनिकल एनर्जी कत मज इलेक्ट्रिकल एनर्जी मगर कत फॉर्म अल्टरनेटिंग करंट. अम ब्रोट इलेक्ट्रिक करंट हासिल गसान एसी जनरेटर ईजाद करने ब्रोट, दैट करंट वाज डेवलप्ड बाय थॉमस एल्वा एडिसन. We get current from battery or chemicals. Please remember, batteries or chemicals. Direct current is one as chemicals. जो थॉमस एल्वा एडिसन ने डिस्कवर किया है बैटरीज थ्रू बैटरीज और केमिकल्स. दैट वाज एक्चुअली डीसी करंट, डायरेक्ट करंट. डीसी करंट के बारे में थोड़ा बहुत मैं उनके बारे में बताऊंगा. वो थोड़ा बहुत हिस्ट्री अल्टरनेटिंग करंट यह एसी डिवाइस यम मज मैकेनिकल एनर्जी मे केमिकलन हज जरूरत मे बैटरी हज जरूरत. मैकेनिकल एनर्जी करा बह कन्वर्ट अगर कम कर, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करा इलेक्ट्रिकल एनर्जी मगर कत फॉर्म अल्टरनेटिंग करंट. मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में बताऊंगा. गोडनिच करंट डिस्कवर कर थॉमस एल्वा एडिसन. थॉमस एल्वा एडिसन करंट सह बैटरी पे या केमिकल पे सह डीसी करंट. It was expensive. This current was expensive. क्या अगर तुम गरस में बैटरी अत नेरान वरी डोड़ वरी तो अल्टीमेटली बे यह हेकान वारिया ट्रैवल करित कहीं बे अत लोड ते हेकान ज़्यादा तुलित कहीं. दिस वाज थॉमस एल्वा एडिसन. देन ही वाज अ बिग बिजनेस मैन. खबर कंस पाए सह वारिया बिजनेस मैन थॉमस एल्वा एडिसन. ही गेव करंट इन द फॉर्म ऑफ डीसी. ही डेवलप्ड करंट थ्रू बैटरीज और केमिकल्स. देन ए यंग साइंटिस्ट, अख लकुट साइंटिस्ट यंग साइंटिस्ट आव यस नाव निकोलस टेस्ला. सह गो योर थॉमस एल्वा एडिसन कर फैक्ट्री अक कस्म ही वाज इन सर्च ऑफ वर्क. ही वेंट देयर. निकोलस टेस्ला तम कर ही वाज अ मैजिकल पर्सन. तम वन थॉमस एल्वा एडिसनस वोन दोपन करंट दिम अगर बह अम सस्त करंट दिम बे पक लॉन्ग, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. थॉमस एल्वा एडिसन करनस ही डज नॉट एग्रीड. अल्टीमेटली उसने उसको बाहर निकाला. जो ये अल्टरनेटिंग करंट का जो कॉन्सेप्ट है, ये जनरेटर का कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ निकोलस टेस्ला का है. निकोलस टेस्लान क्या दोपन अगर हसा मैकेनिकल वर्क करो मे बैटरी हज जरूरत न अगर कम कर
यह हसा कन्वर्ट कर इलेक्ट्रॉन सह कम कित पे करान सह वन बह थोड़ा बहुत अम ब्रो पकन ब्रो वन बह ये मुझे डिटेल में बताना है आगे AC करंट क्या गई DC करंट क्या गई अल्टरनेटिंग करंट थोड़ा बहुत क्या मे थोड़ा जिक्र अल्टरनेटिंग करंट मे इन डिटेल में अगले जो अगला यूनिट है वो सेपरेट यूनिट है अल्टरनेटिंग करंट का करंट विच चेंजेस इट इज डायरेक्शन a current which changes its direction डायरेक्शन मीन्स चेंजिंग साइन कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव होगा इसी को हम चेंज ऑफ डायरेक्शन कहते हैं such type of current is called alternating current it may change magnitude also but it is not compulsory there is it may change magnitude also but it is not necessary condition necessary condition क्या है necessary condition सिर्फ it changes its direction okay कभी पॉजिटिव होता कभी नेगेटिव डायरेक्ट करंट क्या हुआ it does not change its direction that means it does not change its sign no change in sign graphically कित पर छावा सो वन बिग चैप्टर no change of sign मैग्नीट्यूड इसमें भी चेंज हो सकता है मगर दैट इज नॉट ए नेसेसरी कंडीशन नो चेंज ऑफ साइन या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये कभी पॉजिटिव होता है कभी नेगेटिव इसको हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं दैट मीन्स AC जनरेटर की डेफिनेशन क्या है ये इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट अब मुझे ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है दैट इज इंपॉर्टेंट ऑन विच प्रिंसिपल इट इज़ बेस्ड किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है जो ये अल्टरनेटिंग करंट है किस प्रिंसिपल के इट वर्क्स प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल के प्रिंसिपल इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इट वर्क्स on the principle of electromagnetic induction आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है व्हेन कॉइल इज रोटेटेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जब कॉइल रोटेट होते हैं इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन इट एंड ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ ए करंट इज डेवलप्ड इन इट ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है इसमें दैट मीन्स अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ करंट बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड यू नो दिस इसको हम इसी प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन क्या कर तमिस कुछ कुछ चीज़ जरूरत कंस्ट्रक्शन खतर कंस्ट्रक्शन जब हम पढ़ेंगे थोड़ा बहुत आपको समझ आ जाएगा कंस्ट्रक्शन कश पे अगर बह यह बनावन AC जनरेटर में क्या क्या चीज़न हज जरूरत गोडनेथ जरूरत मेन कंपोनेंट यम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड सपोज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जे एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए सपोज दिस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड सपोज यह नॉर्थ यह साउथ ओके दिस इज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हियर दैट मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इसमें डेवलप होते मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है इस फील्ड के अंदर मैं एक कंडक्टिंग कॉइल जिसको हम कहते हैं आर्मेचर कहते हैं दैट मीन्स आई नीड फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड ए स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड maybe it may be some say it may be of cylindrical shape और अगर cylindrical shape का भी होगा इसमें कोई फर्क नहीं था जो इसमें हम रखते हैं एक कॉइल कंडक्टिंग कॉइल सपोज दिस इज द कंडक्टिंग सपोज दिस इज मैग्नेटिक फील्ड हियर वी आर प्लेसिंग कॉइल इन इट दिस कॉइल इज कॉल्ड आर्मेचर कॉइल अत कॉइल क्या कर दिस कॉइल ABCD सपोज ABCD this is a coil conducting coil
This is called armature coil. It consists of large number of turns insulated. इसमें एक ही टर्न नहीं है, large number of turns of insulated copper wire wound over a soft iron core. That means this armature coil છે अथ में large number of turns आसान. It does have n number of turns. जो कॉपर की बनी है, जो ओवर सॉफ्ट आयरन कोर पे हमने उस पे दे आर वुंडेड ओवर द सॉफ्ट आयरन कोर. दैट दिस इज ऑर्बिटल. तिमन को स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड जरूरत में बेचा कॉइल, बट इट शुड बी रोटेटिंग कॉइल. प्लीज अंडरस्टैंड, यह गई रोटेट गसन. आज द आर्मेचर कॉइल रोटेट्स, युस यह रोटेट करान बिटवीन द पोल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड. जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है provided by the coil, provided by the field magnet, it is perpendicular to the coil. ये perpendicular to the coil. मगर जब ये रोटेट होती है, सपोज दिस परपेंडिकुलर टू है, जब ये रोटेट होती है जो एंगल होता है वो कॉन्स्टेंटली वो इसको चेंज करता है. जब एंगल व्हेन एंगल इज चेंजिंग, यानी एंगल गसान चेंज है. सपोज तुम परपेंडिकुलर या ये परपेंडिकुलर या सपोज मगर एंगल गसान चेंज. ये एंगल गसान चेंज तमिक मतलब गो ये एंगल गसान चेंज, ये एंगल गसान चेंज, फ्लक्स आल्सो चेंजेस. You know that magnetic flux depends upon the area of the coil, magnetic field, and it depends upon the angle. It depends upon the angle. जो आपको पता है AB cos theta, it depends on the angle also. That means जो angle है constantly change होता है इधर. जब angle change होता है, due to change in the angle, the magnetic flux linked with the coil also changes. When ये change होता है, it produces an EMF. जब EMF develop होता है, due to this, that means the magnetic flux linked due to rotation, due to rotation of the coil, the magnetic flux linked with the coil changes. यदि change होता है जब किसी आपने already पढ़ा, when the magnetic flux linked with the coil changes, what is it? It produces an EMF, electromagnetic force. It produces an EMF. जब EMF produce होता है, that means जब ये प्रोड्यूस होता है, EMF प्रोड्यूस होता है, इससे डेवलप होते हैं करंट. देन EMF जब प्रोड्यूस इट्स देन करंट फ्लोज थ्रू इट. करंट गसान डेवलप. तमिक मतलब गो या बैटरी जरूरत न केमिकल जरूरत, सिर्फ मैकेनिकल वर्क कर. मैकेनिकल वर्क कित पे कर, वी हैव टू रोटेट. अस कर रोटेट, क्या कर रोटेट कर कॉइल. ये रोटेट कर कॉइल, एंगल चेंजेस, द एंगल बिटवीन दिस मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस कॉइल चेंज. यदि कॉइल गसान चेंज, that means the magnetic flux linked with the coil also change. Yeli change गसान छ इम सत गसान, इम सत क्या गुब्रेव गसान, यली coil गसान change, इम सत गसान प्रोड्यूस गसान EMF, तत गसान प्रोड्यूस करंट. मगर यात सत युस ये आर्मेचर कॉइल सत छ अत सत बे अफ two ends of the armature coil are connected to brass slip rings. These are called R1 and R2. These are called slip rings. Slip rings क्या छ वनामन ती वन बह. स्लिप रिंग्स अम मूजूब वन ताकि यह कॉइल रोटेट गसान रोटेट गसान नम ति. अगर नहीं रोटेट गस, अगर नम स्लिप रिंग्स रोटेट गसान अथ सह R1 and these are called slip rings. Slip rings. Why these are placed in the ends of the armature coil are connected to brass slip rings R1 and R2. These rings rotate with the armature coil. अगर नम रोटेट गसान की तेली खूर कॉइल, तेली वल यह कॉइल यह छेन तमिक मतलब गो यह कॉइल सती रोटेट गसान R1 and R2 रोटेट. But current produce करने सत we place the two carbon brushes B1 and B2. Suppose these are brushes here, carbon brushes B1 and B2. They are connected with the load or present against these slip. These brushes remain fixed with the slip rings, rotate along with the armature coil. These brushes are connected to the load. But you see output they are connected with the load. Produce electricity. It works on the principle of electromagnetic induction. Ye electromagnetic induction kis pait karan produce? We placed in this north and south poles mans karan is kam is thavan armature coil, a coil ak thavan conducting coil. It is called armature coil. It is having a number of turns insulated copper wire wounded over a soft iron core. When it rotates, because when we rotate the coil, the angle, the lines which are perpendicular, the angle starts changing. Yeli angles gasan change. That means the angle gets changed. Magnetic flux depends upon also angle. That means the magnetic flux linked with the coil changes. The linked gasan change is for develop EMF. EMF produce kara electric current. That means these two ends are connected with slip rings. Slip rings kara put
connected so that they can rotate with the coil, and these slip rings are connected with brushes B1 and B2. They are connected with the load. Mainly shat construction so. I hope you have got it. Inshallah, in tomorrow's lecture we will discuss the working and the graph of AC. Okay, I thank you very much.